जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीये पार्वती खंड अथ विंशोऽध्यायः। नारद उवाच विधे नेत्र समुद्धृत वहि ज्वालारहरस्य सा गता कुत्र वद त्वं तच्चरितं शशिमौलिनं। ब्रह्म उवाच यदा भस्म चकाराशु तृतीयनयनानल शम्भो कामं प्रज्ज्वाल सर्वतो विफलस्तदा हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये सचराचरे सर्वे देवर्षयस्तात शरणं मां ययुद्धृतं सर्वे निवेदयामासु तद्दुःखमहमाकुला सुप्रणम्य सुसंस्तूय करो बद्ध्वा नता तच्छ्रुत्वाहं शिवं स्मृत्वा तद्वेतुं सुविमृश्य च गतस्तत्र विनीतात्मा त्रिलोकावनहेतवे सन्दग्धुकामः सशुचिर्ज्वल्यामालातिदीपित स्तम्भितो रम्मया शम्भु प्रसादात्पत्सुजे तेजसा अथ क्रोधमयं वह्निं दग्धुकामं जगत्त्रयं वाण्वन्तम् आकाशं च सौम्यज्वालामुखं मुने तं वाण्वतनुमहं समादाय शिवेच्छया सागरं समगां लोकहिताय जगतां पति आगतं मा समालोक्य सागरसाञ्जलिर्मुने धृत्वा च पौरुषं रूपम् आगत सन्निधिं मम सुप्रणम्याथ मां सिन्धुं संस्तूय च यथादिति स मामुवाच सुप्रीत्या सर्वलोकपितामहं सागरुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं ब्रह्मन्नद्राखिलाधिप तन्निर्देशय सुप्रीत्या मत्वा मां च स्वरेवकम् अथाहं सागरवचः श्रुत्वा प्रीतिपुरःसरं प्रावोचं शङ्करं स्मृत्वा लौकिकं हितमावहन्। ब्रह्म उवाच शृणुतात महाधीमन् सर्वलोकहितावह वच्म्यहं प्रीतिः सिन्धो शिवेच्छा प्रेरितो हृदा अयं क्रोधो महेशस्य वाडमात्मा महाप्रभु दग्ध्वा कामं धृतं सर्वं दग्धुकामो भवत्ततः प्रार्थितोऽहं सुरे शीघ्रं पीडिते शङ्करेच्छया तत्रागत्य द्रुतं तं वै तातस्तम्भितवान् शुचिम वाग्यं रूपमादत्त तमादायागतोन्नः निर्दिशामि जलाधार त्वामहं करुणाकर अयं क्रोधो महेशस्य वाड्वं रूपमाश्रित ज्वालामुखस्त्वया दार्यो यावदाभूतसंप्लवम् यदात्राहं समागम्य वत्स्यामि सरितां पते तदा त्वया परित्याज क्रोधोऽयं शङ्करो द्रुत भोजनं तोयमेतस्य तव नित्यं भविष्यति यत्नादेवावदार्योऽयं यथा नोपैति चान्तरम् इत्युक्तो हि मया सिन्धुरङ्गिचक्रे तदा ध्रुवं ग्रहीतुं वावं वह्निं रौद्रं चाशक्यमन्यत ततः प्रविष्टो जलधो स वावतनुशुचि वार्योदांसुदहंस्तस्य ज्वालमाला विदीपित ततः सन्तुष्टचेतस्क
स्वं धामाहं गतो मुने अन्तर्धानमगात् सिन्धुर्दिव्यरूपः प्रणम्य मां स्वास्थ्यं प्राप जगत्सर्वं निर्मुक्तं तद्वाद्यत्यात् देवा बभूव सुखिनो मुनयश्च महामुने। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे वड्वानलचरितवर्णनं नाम 20 अध्यायः। जय गुरुजी।